Assalamu alaikum, bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne AAM-Tech. J'espère que tout va bien. Indefinite articles कौन से होते हैं फ्रेंच में? आ, उन और दे. ठीक है, जो आ है वो यूज होता है मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए, उन यूज होता है सिंगुलर फेमिनिन के लिए. ठीक है, और दे जो है वो मैस्कुलिन हो या फिर फेमिनिन हो, लेकिन प्लूरल हो तो हम दे यूज करते हैं. चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं. Question number 1. What is the indefinite article for masculine singular nouns beginning with a consonant le, la, un, une? Answer is un. Masculine singular के लिए कौन सा यूज होता है? un. Question number 2. Which indefinite article is used for feminine singular nouns beginning with a consonant le, la, un, une? अब feminine के लिए बताना है. The answer is exactly une. Third है, fill in the blanks with the correct indefinite article. First क्या है? Dash, chien et mignon. La, le, la, un, une. Answer is un chien et mignon. Question number 4 देखते हैं. Choose the correct indefinite article. Dash, fille et intelligent. Le, la, un, une. And the answer is definitely une fille et intelligent. Question number 5. Select the appropriate indefinite article. J'ai acheté dash livre hier. Definitely masculine है तो un livre. J'ai acheté un livre hier. Question number 6. Determine the correct indefinite article. Elle a mangé dash pomme. The answer is elle a mangé une pomme. Question number 7. Il cherche dash emploi. Answer is il cherche un emploi. Masculine है. Dash professor is sympathetic. Le, la, un, une. Un professor is sympathetic.
Elle a vu des arbres dans le bac. Le, des, un, une. Masculin, un arbre. Elle a vu un arbre dans le bac. Dash, alif et un retard. ठीक है? Le, la, un, une. Answer is un élève et un retard. élève क्या है हमारे पास? स्टूडेंट, मैस्कुलिन. ठीक है, एक स्टूडेंट की बात हो रही है.